हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ड्रीम पाथ। आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट हंड्रेड करेंगे जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। ये सब ऑल वन डे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्या गया है, माउंटेन्स, पासेस, प्लेट्यूज एंड फिजिकल फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? दैट इज कंचनजंगा है। विच इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट। माउंट वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? नेपाल चाइना बॉर्डर। इसको लर्न कर लीजिए, ये हमेशा पूछता है, पीवाईक्यू है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया? हिमालयस। Which is longest mountain range in India? Himalayas. Which mountain range lies in South India? Western Ghat. Which mountain range is called Sahyadri? Western Ghat. Which mountain range runs parallel to India's western coast? Western Ghats. Which mountain range runs along the eastern coast of India? Eastern Ghats. Which mountain range is older than the Himalayas? Aravalli Range. Which is the oldest mountain range in India? That is Aravalli Range. अरावली रेंज के बारे में ना, अरावली रेंज के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। Which mountain range runs through Rajasthan? अरावली रेंज। देखिए, तीनों में अरावली रेंज के बारे में ही पूछा गया है। Which is highest peak of the Western Ghat? Anamudi. Where is Anamudi peak located? Kerala. Which is the highest peak of Eastern Ghat? महेंद्रगिरी। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज? गुरु शिखर। ये भी लर्न कर लीजिए, ये नाम हमेशा पूछता है। वेयर इज गुरु शिखर लोकेटेड? माउंट आबू राजस्थान। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? तिब्बतियन प्लेट्यू। विच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? डेक्कन प्लेट्यू। विच प्लेट्यू लाइज साउथ ऑफ नर्मदा रिवर? डेक्कन प्लेट्यू। Which plateau is rich in minerals in India? Chota Nagpur Plateau. Which plateau is known as the storehouse of minerals? Chota Nagpur Plateau. Which pass connects India with Central Asia? Karakoram Pass. ये सब इम्पोर्टेंट है, एक दो बार ये सब वीडियो देख लेंगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छी तरीका से। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पास इन इंडिया? खारदुंगला। और रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगा जो आप पहले से पढ़ के रखे होंगे ना। विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले? जोजिला। विच पास कनेक्ट्स मनाली टू ले? रोहतांग पास। विच पास कनेक्ट सिक्किम विथ तिब्बत? नथुला पास। विच पास इज कॉल्ड द गेटवे टू कैलाश मानसरोवर? लेपू लेक पास। विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ चाइना? बोमडीला पास। इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है, हमेशा पूछता है। Which is the largest mountain range in the world? Himalayas. Which mountain range is called the abode of snow? Himalayas. Which mountain range forms India's northern boundary? Himalayas. Which plateau lies between the western and eastern Ghat? Deccan Plateau. Which hills are located in northeast India? Patkai Hills. Which mountain range lie in Jammu Kashmir? पीर पंजाल रेंज। इसके बारे में भी पूछता है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है पीर पंजाल रेंज के बारे में, तो याद कर लीजिए। Which is the highest peak of India located in Ladakh? Saltoro Kangri. Which plateau is known as the Malwa Plateau? Madhya Pradesh. Which plateau lies in Jharkhand? Chota Nagpur Plateau. Which hill separates the Deccan Plateau from coastal plains? Western Ghats. Which mountain range is known as Nilgiris? Western Ghats. Which is the meeting point of Western and Eastern Ghats? Nilgiri Hills. Which is the highest hill station in India? Gulmarg. Which mountain range lies along the Indo-Nepal border? Himalayas. Which pass connects Himachal Pradesh to Ladakh? Baralachala. Which plateau is famous for black soil? डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनता भी है, जिसके बारे में बढ़िया से पढ़िएगा। विच माउंटेन रेंज इज फाउंड इन महाराष्ट्र? वेस्टर्न घाट। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेक्कन प्लेटू? अनामुदी।
Which hills are located in Odisha Eastern Ghats? Which mountain range is located in Tamil Nadu Nilgiri Hills? Which plateau is called the roof of the world? Tibetan Plateau. Which pass connects Kullu with Lahaul? Rohtang Pass. Which pass connects Uttarakhand with Tibet? Lipu Lake Pass. Which mountain range is known as Purvanchal Patkai Hills? Which hills are located in Nagaland? Patkai Hills. सब याद कर लीजिए. Which hills are located in Meghalaya? Garo, Khasi and Jaintia Hills. Which hill are called the Scotland of East Shillong Plateau? Which plateau is known as Shillong Plateau? Meghalaya. Which mountain range lies between the Indus and the Ganga Himalayas? Which range separates Kashmir Valley from Ladakh Jaskar Range? Which range lies between the Greater Himalayas and Lesser Himalayas Pir Panjal Range? Which range lies between Shivalik and Lesser Himalayas Himachal Range? Which hills are known as Shivalik Hills, Outer Himalayas? Which is the youngest mountain range in the world, Himalayas? Which plateau is located between Narmada and Tapi rivers, Satpura Plateau? Which mountain range is called विंध्याचल विंध्या रेंज? देखिए यहाँ विंध्याचल, यहाँ विंध्या तक आया ना, उसी तरह विंध्या रेंज को टिक कर दीजिएगा. इस तरह याद करिएगा तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा. विच माउंटेन रेंज डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया? विंध्या रेंज. विच हिल्स आर लोकेटेड इन कर्नाटक? वेस्टर्न घाट. Which hills are located in Tamil Nadu and Kerala? Nilgiri Hills. Which is the highest peak of Nilgiri Hills? Doda Betta. Which mountain range lies in Andhra Pradesh Eastern Ghats? Which plateau is called the Karnataka Plateau? Deccan Plateau. Which hills are known as the Cardamom Hills, Kerala? Which pass connects Jammu with Kashmir, Srinagar? Banihal Pass. Which tunnel has replaced Banihal Pass? Jawahar Tunnel. Which is the highest plateau in India? Ladakh Plateau. Which plateau is called the cold desert of India? Ladakh Plateau. Which mountain range is located in Ladakh? Karakoram Range. इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा पूछता है, PYQ क्वेश्चन है. Which is the second highest peak in the world? K2 Godwin in Austin. Where is K2 located? Karakoram Range. Which is the highest peak in the Karakoram Range? K2. Which plateau is rich in coal in India? Chota Nagpur Plateau. Which hill are located in Assam? Patkai Hills. Which mountain range is called the backbone of India? Western Ghats. Which pass connects Sikkim with Bhutan? Jilip-La. Which pass connects Arunachal Pradesh with Myanmar? Diffu Pass. Which hills are located in Mizoram? Lusai Hills. Which hills are located in Tripura? Jampui Hill. Which mountain range is called Satpura Central Highlands? Which plateau is known as Bundelkhand Plateau? Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. यूपी एमपी याद कर लीजिए. विच हिल आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? मैकाइल हिल्स. विच माउंटेन रेंज इज कॉल्ड द मैकाइल सतपुरा रेंज. विच पास इज गेटवे ऑफ कश्मीर वैली? बनिहाल पास. ये पूछता है, इसको लर्न कर लीजिए, अभी लर्न कर लीजिए. कश्मीर घाटी का द्वार किसे दर्रे को कहा जाता है? तो इसको बनिहार दर्रे से कहा जाता है. बनिहाल पास. विच माउंटेन रेंज लाइस इन ओडिशा? ईस्टर्न घाट्स. Which plateau lies in Maharashtra? Deccan Plateau. Which hills are known as Annamalai Hills? Tamil Nadu and Kerala. Which is the highest peak of Annamalai Hills? Anamudi. Which plateau lies in Telangana? Deccan Plateau. Which mountain range forms the western boundary of Deccan Plateau? Western Ghats. Which mountain range forms the eastern boundary of Deccan Plateau? Eastern Ghats. Which physical feature separates India from Sri Lanka? Palk Strait. इसको याद कर लीजिएगा, PYQ में पूछा गया है. तो यहाँ पे आपका स्टैटिक जी का क्वेश्चन तो 100 फिनिश होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ. तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में.